Hello and welcome back to Chasing the Target. It is the end of the warm-up games in the ICC World Cup. The India versus Netherlands games. Unfortunately, बारिश हो गई वहाँ पे. मगर जहाँ पे हमारे रिपोर्टर वहाँ पे खड़े हुए हैं, the legend, the man, the myth, Mr. Faisal. He's at the Hyderabad Rajiv Gandhi International Stadium. वहाँ पे कोई बारिश नहीं है. Pakistan versus Australia, a very good game. First of all, how are you and can you hear me? I can hear you. Can you hear me? Is my mic working? Yeah, your mic is working. Yeah, I can hear you. Bolo. Yeah, नहीं बोलेगा क्या है भाई. I mean, it was an amazing, incredible experience था. लोग फनीली लोग काफी आया यार. I'm expect नहीं कर रहा था. 25% तो capacity full हो गई थी. 25 to be a stretch. 20 maybe, but towards the second inning, a lot of people came. बाबर को देखने काफी लोग आए और बाबर परफॉर्म करा. 90 रन दिया. लोग बोलते स्टैट पैडर है, देखो ने 100 छोड़ दिया. Obviously, warm-up game पे it doesn't make a big difference. But yeah, I mean, incredible atmosphere था ground में. Throughout the ground, David Warner, the biggest entertainer. बापू ने too good है यार. जितना भी मैं देख रहा हूँ हैदराबाद कहीं को छोड़े इसको बोल के पूरी पब्लिक अभी भी उसके पीछे है. He did सामी स्टेप. He did ये पुष्पा का करा उन्हें. पुष्पा का वो चप्पल छोड़ने का स्टेप करा उन्हें. पूरा टाइम एंटरटेन करा. Every time anyone asked him anything, he reciprocated. He came up with a response for the crowd. Yeah, he did. And if you look at Australia in the beginning first, their batting, everyone contributing with the bat. अगर आप देखें ऊपर से नीचे तक सब contribute कर रहे हैं bat के साथ. Everyone getting in form, whether it's Maxwell, Cameron Green का भी अच्छा knock था. They're batting very deep. So yeah, initially, your thoughts on the Australia batting, the way they batted आज, and it does look good for the Australian team right now, batting wise. Australia's batting was incredible. मेरे को थोड़ा मिचमाश थोड़ा shaky दिखा था शुरू में. I felt कि he was not able to read Shaheen's length properly. तो वहाँ थोड़ा struggle करा उन्हें. Warner तो spectacular. He knows his ground. आग बंद कर दो, but पट्टे को मालूम कहाँ मारने का. इसका ground ने नाप लिया ब्रो. मालूम किधर क्या करने का है. उसके बाद आपके Steves में तो Labuschagne आए. Steves में शुरू में attacking करना शुरू कर दें. Labuschagne joined him. बट देन एकदम से जो बैलेंस ऑफ हुआ वो 2 विकेट जल्दी चले गए. समझा मैं पाकिस्तान वापस लड़ेंगे. फिर आते अपने Cameron Green and Josh English partnership यार. क्या जबरदस्त. English is a very good add to this team. Fielding भी ठीक ठाक ही. I know drop catch करा था, but this guy is a very good asset to the Australian team. आइए भाई आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं. कुछ भी नहीं है. लाइव स्ट्रीम है. ये हमारे स्टूडियो में मुस्तफा भाई बैठे हैं. Whoa! The fans, the boys! आपको आज का क्या किसके लिए आए थे आप लोग मैच देखने? खास बाबर के लिए आए थे. और बाबा परफॉर्म कैसा करा? जबरदस्त. और तो शॉट कैसे थे यार? शॉट बहुत प्यारे थे यार. शॉट बहुत प्यारे थे. जबरदस्त शॉट खेला है. 2-3 जबरदस्त शॉट भाई. उसने जो टेक्निक है उसकी जिसका जिस तरीके से था. और आप ये वर्ल्ड कप में क्या लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं? इंडिया का मैच हुआ नहीं आज. इंडिया में तो हुआ नहीं. इंडिया में विराट कोहली की बैटिंग. विराट कोहली आज पूरे आप लोग भी सताए क्या टीम को? पाकिस्तान काफी लोग सता रहे थे. शाहीन की शादी की दावत कर रहे थे. टीम को अच्छा एंजॉय कर रहे थे. अच्छा नहीं अच्छा है. थैंक यू फॉर मैं आप लोग ज्वाइन करें. ऐसे भाई अपना चैनल चेसिंग द टारगेट. चेसिंग द टारगेट. Yeah. फैज जी. ओके थैंक यू. तो या आई मीन काफी पब्लिक चली गई थी जल्दी लास्ट के 5 ओवर में. आई थिंक डॉक आउट कर दिए थे पब्लिक. बट जिसके भी साथ में जुड़ सकता हूँ. आई ट्राई एंड गेटिंग समवन विद. फिर साहब ये रेड क्या पहने हुए? रेड. ये रेड है. देखो ये मीडिया वालों का बेस्ट है. Oh my God. At home, hopefully I'll show you at home. And वही अच्छा है कि भाई व्यू अल्हम्दुलिल्लाह. मतलब आई मीन शाउट आउट भाई जितने भी लोग हैं. मुस्तफा भाई भी शाउट आउट भाई. उन्होंने कोई काम दिए. मैं I was realizing this while I was watching the match that I can never have fathomed in my life कि भाई मैं वहाँ पे बैठूंगा और मैं वो देखूंगा. तो a lot of big thank you goes to Mustafa for giving me the job and stuff. अरे man, yeah, it was a surreal feeling man. Like I can't express कि शाहीन मेरे सामने है, बाबर मेरे सामने. And they came all towards where I was standing. Long on, long off के time पे and then third man and final leg के time पे. तो वो situation में it was incredible feeling कि भाई the people I was watching in January on TV are right in front of me right now. Crazy, and I'm really happy that you got that experience and you're also killing it. Hire करना चाह रही. तुम hire करना चाह रही. किसको hire करना चाह रही? किसको hire करना चाह रही? आपका नाम? अली अफजल. माशाल्लाह, what up my guy. तुम्हारा पुकारा करे थे गाना पूरा पूरा डेढ़ भाई नाटू ये वो. तो आज किसके लिए स्पेसिफिकली डेविड अब भाई के अलावा किसके लिए आए? बस खाली डेविड वार्नर के लिए. भाई का भी नाम बोलो यार. भाई भी शर्माए. क्या हुआ भाई? बाबर का बैटिंग देखे आप कैसे लगा? सिर्फ मैं बाबर आजम के वास्ते आया. बाबर आजम को देखने.
हाँ, तो कैसी लगी बैटिंग? बहुत अच्छी देखी। रेडी दिख रही पाकिस्तान तुम्हारे को? बॉब्स इंशाल्लाह ये पाकिस्तान फैज एक सवाल है उनके लिए। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप है। अरे भाई बहुत बड़ी बात बोल दी उस्ताद। चल, नहीं लेकिन ये इंडिया का क्या है यार? इंडिया का नहीं हमारा। हाँ हम पहले से बाबर आजम को सपोर्ट करते हैं। हाँ इंशाल्लाह चलो, शाहीन की बॉलिंग कैसी दिखी? बहुत मजे की। बट हारिस राव बहुत बुरा पिटा है यार। आता फॉर्म पे आता। ग्लेन मैक्सवेल, भाई too good है। That guy is going to win them the World Cup probably, man. Glenn Maxwell बहुत solid player है। आप लोग कहते हैं ज्वाइन करने के लिए चेसिंग द टारगेट है यूट्यूब चैनल, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब पे है चेसिंग द टारगेट। कभी भी आप आना चाह रहे, मैं अगर दिखा ग्राउंड में नहरूंगा, ग्राउंड के तरफ लाइव स्ट्रीम में अभी भी चलते जाएंगे। आप बात करो और आप चेसिंग द टारगेट एंजॉय ताजा। हाँ देख लो अभी अपलोड हम फैज सॉरी मुस्तफा, ये भी अपना काम है, सब्सक्राइबर ला रहा हूँ मैं जब तक नहीं आपको एंजॉय ताजा पूछ रहे, आप है किधर? ही वांट्स टू मीट यू। मैं अभी तो मैं हाँ। यहाँ गेट नंबर 4 पे हूँ। मैं गेट नंबर 4 गेट नंबर 4 पे है, राजीव गांधी स्टेडियम, वहां पे है फैज। ऊपर स्टेडियम पे बैठा हूँ मैं। ऊपर स्टेडियम पे फिर मैं आपको एक चीज और सवाल पूछना चाह रहा हूँ। जो बाबर की इनिंग्स थी वो मैं भी, बाबर की इनिंग्स मेरे को भी थोड़ा ग्लिम्स मिल गया, मैं भी देखा वो इनिंग्स, बहुत प्यारी लगी। बट that partnership, that's where Australia brought in the spinners. How much you take that into play? Because part timers डाल रहे थे वो टाइम पे, तो आप कितना लाइक उसको जज करेंगे वो पार्टनरशिप को? बिल्कुल, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल वही बोल रहे थे कि भाई लैबुशेन को मारा है, स्मिथ को मारा है, जो बॉलर आर आउट ऑफ फॉर्म। इट डजंट रियली मेक सेंस। इट डजंट मेक सेंस कि भाई वैसे प्लेयरों को, कैन यू हियर मी? आई कैन हियर यू, यस यस यस, बोलिए। तो वैसे प्लेयरों को लगाना कि डजंट मेक सेंस कि भाई बाबर उसको मार के 100 लगा लिया। लाइव स्ट्रीम है भाई, लाइव स्ट्रीम रिपोर्टिंग है यूट्यूब पे। भाई कुछ बोलना चाह रहे भाई, आपका नाम बोलिए। आप बोलिए। शेख है और मैं शेख बेबी जी, इमरान भाई वांट शेख इट। महाराष्ट्र से आए हो क्रिकेट मैच देखने के लिए? क्या बात है, मुंबई अक्का मुंबई खेलेगा क्या? हो रही पब्लिक मुंबई की वन टाइम, ये महाराष्ट्र की पब्लिक है और ये बड़ी क्रेजी है। ये बात है। तो आप जबरदस्त। इतनी दूर से आके किसको स्पेसिफिकली देखना है? हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया दोनों को देखने के लिए आए हैं। प्लेयरों में से कौन? पैशन बेबी, हारिस राव, बाबर आजम, मिचेल स्टार्क, क्या बात है। और बोले थे क्या आप सभी इंडिया के कोई मैच को जाने वाले हैं आप? अभी टिकट ही नहीं मिल रही इंडिया के मैच की। अभी हाउसफुल है तो क्या करेंगे? हाउसफुल है इंडिया। बस हम चाहते हैं कि इंडिया इस बार वर्ल्ड कप मारे और फिर से चैंपियन बने। बस वही दुआ है सबकी। ऑब्वियसली वार्म अप मैच तो नहीं हुआ इंडिया का, आपको लगता है उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है? नहीं, उसका कुछ फर्क पड़ना नहीं चाहिए क्योंकि इंडिया ने लास्ट की ओडीआई सीरीज खेली है, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उनको क्रिकेटों के बारे में। बाकी तो भैया सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब। चेसिंग द टारगेट आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पे। टारगेट मोहम्मद अनीक भाई पूछ रहे मेरे से, मुस्तफा भाई आप नहीं गए आज स्टेडियम? मैं जाके भी आ गया भाई, जल्दी जाके आया मैं। मुस्तफा भाई बहुत जल्दी है यार। मुस्तफा भाई का एक अंडरग्राउंड रूट है, उनके घर से कनेक्टेड है ऊपर स्टेडियम। तो मुस्तफा भाई आई मिस नहीं, मैं जब बाबर की इनिंग खत्म हुई, मैं जब निकला था, बिकॉज ये लाइव स्ट्रीम सेटअप करना था तो मैं निकल गया था। तो बाबर जब रिटायर हुआ मैं भी रिटायर हो गया स्टेडियम में से। आ गया एक हमारे साथ। ओह वो लुकिंग ब्यूटीफुल मैन, व्हाट इज दैट जर्सी? या भाई फुल सपोर्ट पाकिस्तान को, फुल सपोर्ट। बाबर रात धूम मचा दिए हैदराबाद के ऊपर। अगर हैदराबाद में मैं बोलूंगा तो मौत डाल दिए। वाह, मौत डाल दिए। ये हमारी हैदराबादी चिराग बहुत जबरदस्त खेले, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खेले। बट अब मेरे को आप ये बोलो, लैबुशेन स्मिथ कुमार का अंगार मारेगा भैया? हाँ मारे, बट अब बड़े बॉलरों के सामने मानना है। हाँ वो है। लेकिन आपको भाई बहुत बड़े बाबर आजम के फैन है, अलग दिख के आ रहा था, तो ड्रेसिंग करके आए बाबर आजम के नजर मेरे पास। फेवरेट शॉट कौन सा था आज? पूछो फेवरेट शॉट कौन सा था आज बाबर का? बाबर का हाँ मेरे लिए तो 6 था भाई। वो छिक्का था बाबर का, बहुत जबरदस्त। मैं तो बोलता हूँ बाबर के हर एक शॉट एकदम झकास, खतरनाक, जबरदस्त, चीख मार, मौत डाल दिए बोलता हूँ। ये बात। और कोई मैसेज देना चाह रहा है इंडिया टीम के लिए, कोई भी टीम के लिए? कोई आपके पाकिस्तान के लिए दूंगा। पाकिस्तान अगर आप फैंस तो नहीं आ देख रहे हैं आपको शायद, हाँ यहाँ पे नहीं आ रहे, लेकिन फुल सपोर्ट पाकिस्तान को हैदराबाद से 100% मिलेगा और हमेशा मिलेगा दिल से। भाई लव यू पाकिस्तान। बस चेसिंग द टारगेट आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चेसिंग द टारगेट
तो देख रहे हैं आप हाँ काफी जी। सपोर्ट था for पाकिस्तान थ्रू आउट द डे, हाँ चेसिंग द टारगेट. और फैज So there was a lot of support for Pakistan in general. And again, मैं जैसे बोल रहा हूँ, for me, पाकिस्तान में अगर overall आप मेरे को पूछो कि where I find the gap, it's that third bowler, bro. थर्ड बॉलर की बहुत मसला दिख रहा है मेरे को. नसीम का बहुत बड़ा void आ गया मुस्तफा उधर. उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा हसन अली और वसीम जूनियर के बीच में कौन खेलेगा. जमान खान would have probably been a better option given the fact he doesn't leak runs. एंड वो एक बड़े वसीम जूनियर को आप देखो एंड में 15 रन का एक ओवर गया, 17 रन का एक ओवर गया. बहुत प्रिडिक्टेबल बॉलिंग, बस आगे पटकने के जैसा बोलते अपने को पास. हारिस रफ का काम ही है भाई विकेट टेकर, तो दे विल नॉट माइंड हिम लीकिंग, बट टू बॉलर्स इन द थ्री अगर लीक करेंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा पाकिस्तान. नहीं बिल्कुल वो थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है. आई थिंक हसन अली आज न्यू बॉल के साथ अच्छा ही बॉलिंग करा है, लेकिन आगे जाके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है उन लोगों को मिडिल ओवर्स में. शादाब भी विकेट नहीं ले रहा. फैज आप उसामा मीर वाज मोर इंप्रेसिव, तो आपको ऐसा लग रहा है कि उसामा मीर विल प्रोबेबली माइट गेट अ चांस अहेड नाउ, स्पेशली बिकॉज़ ही कैन बैट टू. बैटिंग भी अच्छा ही कर लिया आज. भाई इनसाइड आउट शॉट देखा आप उसका जो मारा उन्होंने, देखा मैं. शॉट वेरी ब्यूटीफुल बैट लेफ्ट. बॉलिंग भी अच्छी करा, 10 ओवर 68 2 विकेट्स. आई थिंक दैट वाज सेंसेशनल स्पेल फ्रॉम हिम वेल. तो मेरे हिसाब से या प्लेयर अच्छे हैं भाई. बोलिए आइए भाई, बोलिए. अरे आओ भाई, जूनियर था, आओ जी जूनियर था. तो या उसामा मीर वाज वेरी इंप्रेसिव फॉर मी. उसके साथ ही साथ अभी ये था कि भाई बाबर चलो 90 मान लिया, गुड स्टार्ट टू वार्म अप व्हाटएवर ही गॉट, बोथ द वार्म अप गेम्स ही परफॉर्म. हैदराबाद में 2 मैचेस हैं उनके लिए, वो पॉजिटिव है उनके लिए कि देयर 2 मैचेस इन हैदराबाद आउट ऑफ व्हाटएवर लेफ्ट. तो अच्छा एक विकेट का एक स्टडी हो गया. आ जाओ भाई का और भैया हमारे देखो हैदराबाद के लिए क्या दिख रहे हैं माशाल्लाह. व्हाट अ ब्यूटी मैन. वाले मैच को, लेकिन आप काफी अगर 5-6 हजार हो सकता अब आए लोग, तो आप किसके लिए आज आए बड़े भैया अपन तो देखो डेविड वार्नर के बाद से पूरा वो डेविड दुनिया किधर भी जानते हैं डेविड वार्नर. डेविड वार्नर के नए नाम सुनो भाई. डेविड वार्नर, मामू, डेविड वार्नर हमारी चिच्चा है, हमारा जबरदस्त. हैदराबाद को कैसा जीता खाली डेविड वार्नर को निकाले, हैदराबाद बैगन में मिलके शिक्षा रहे. सही बोल रहे. बराबर है बिल्कुल. तो देखो काफी फैंस आए हुए पाकिस्तान से भाई. डेविड वार्नर बोलो खाली. विराट कोहली डेविड द मैन डेविड. तो वहाँ पे दंगे होने वाले अपने वर्ल्ड कप के दौरान. हाँ भैया, पाकिस्तान जीतना ना. इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल, पाकिस्तान को बोलना था. इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल चल लेते हैं. देखो फाइन वॉच है अभी तक, चल लेते हैं ना पाकिस्तान से मैच देखने. सिर्फ देखो खाने का वॉच है. इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल लिख के ले. मोहम्मद रियाज थप्पा लगा लो. इंडिया ऑस्ट्रेलिया 60% ऑस्ट्रेलिया, 40% इंडिया. क्या बात है. 10% भैया इतना बोल चैनल पे वो बोलो ना. 60% टारगेट, चेसिंग द टारगेट. लाइव चल रहा है. लाइव चल रहा है भैया. लाइव ब्रो. लाइव चल रहा. स्पेलिंग 1 मिनट यही है. स्टाइलिंग क्या है? अरे स्पेलिंग देखो मेरे को, देखो घुर के क्या टारगेट ही चेंज नहीं करे नाम. टारगेट है. वही चलेगा. Friends, अच्छा लगा मिलके. you're welcome bro, anytime my bro, anytime buddy. कितने चैनलों में आता भाई आज तक. ए नहीं एवीपी पूरे चैनलों में आ गया. एडब्ल्यू में क्या कर. हाँ क्या बात है. Friends, क्या मुस्ती. आवाज आ रही है? हाँ आ रही है. अच्छा अब ये देखो वार्म अप गेम्स में आप देखिए दूसरे प्लेयर है लाइक जैसा लाबुशेन स्मिथ थे, आप पाकिस्तान में भी देखिए सलमान आगा गॉट बैटिंग, एवरीवन एल्स गॉट बैटिंग. इंडिया दोनों वॉश आउट हो गए. डू यू थिंक इट मेक्स अ डिफरेंस और डू यू थिंक दैट बायलैटरल सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है दैट इट विल गिव देम इनफ प्रिपरेशन गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप? अभी कहीं ना कहीं मुस्तफा मैं वही सोच रहा था बिफोर आई वाज कमिंग इनटू दिस थिंग दैट इंडिया डिडंट वार्म अप. आई डोंट रियली हैव अ प्रॉब्लम बिकॉज़ वेस्ट इंडीज की जो सीरीज थी काफी अमाउंट ऑफ क्रिकेट खेल दिया एक यूनिट ने. एंड आयरलैंड में भी थोड़ा बहुत क्रिकेट खेले. फिर ऑस्ट्रेलिया जस्ट चेन्नई एंड ऑल ऑफ दीस वेन्यूज में दे मैनेज्ड टू प्ले क्रिकेट. 2 मैच खेलने से कितना फर्क पड़ेगा. अगेन दे वुड प्ले सिमिलरली टू अदर कंट्रीज वेयर दे आर गिविंग 3-3 4-4 ओवर्स टू अदर. हाँ बुमराह में भी वुड हैव गॉट एडिशनल बॉलिंग टाइम. दैट माइट हैव हेल्प्ड अस टू नो हाँ भाई बंदा फिट है. ऑब्वियसली बंदा तो अभी तक तो फिट है, दैट्स गुड. बट वही बोल रहा हूँ मैं, इट वोंट मेक अ मेजर डिफरेंस
बिकॉज भाई जो भी अभी भी बाइलैटरल खेले बहुत कैजुअल तरीके में, सॉरी जो भी वार्म अप खेले बहुत कैजुअल तरीके में, साउथ अफ्रीका ले लो, न्यूजीलैंड ले लो, विलियमसन आ रहा मार दे रहा 50, और हैदराबाद की तो पिच वैसे भी फ्लैट है, तो आई मीन इट डजंट मेक अ वेरी ह्यूज एडवांटेज। अब लखनऊ चेन्नई ये जब आएंगे, ये लोग जो वार्म अप खेल वो लोग क्या करेंगे? अब त्रिवेंद्रम और गुवाहाटी में तो कुछ हुआ नहीं, तो इंग्लैंड भी वहाँ फंस गई, अफगानिस्तान भी वहाँ फंस गई, बांग्लादेश का भी एक मैच आई थिंक अबैंडन हो गया, साउथ अफ्रीका का भी एक मैच, तो कहीं ना कहीं द फील्ड इज स्टिल इवन। हाँ चलो पाकिस्तान दो वार्म अप कर लिया, पाकिस्तान फेल हुई तो डबल द अमाउंट ऑफ प्रेशर होगा उन पे, तो आई थिंक कहीं ना कहीं इट लेवल्स आउट के भाई चेन्नई में, और वो 3 मैच सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया वाला गुड ऑपोजिशन टू पिच, सो आई थिंक इट मेक्स सेंस कि चलो भाई चलता है, कोई बात नहीं, बॉयज पे एडिशनल रेस्ट मिल गया। और एनी वार्निंग साइंस फॉर इंडिया, बिकॉज आप ऑस्ट्रेलिया को बहुत करीब से देखे, बहुत ज्यादा करीब से देखे आज, यू हैड लाइक फ्रंट रो टिकट, तो एनी प्लेयर्स, एनी पर्टिकुलर मोमेंट्स दैट यू थिंक अब इंडिया को थोड़ा सा बच के रहना है इन दैट गेम, बिकॉज द फर्स्ट गेम इज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया? अगर अपने को लाइक लेट्स से मिडिल ओवर्स में, अगर लाइक मिडिल ऑर्डर पर्टिकुलरली जो मैक्सवेल है, अभी कैरी तो आउट हो गया है, बट आज के स्पेसिफिकली अगर मैं जाऊँ, स्मिथ लैबुशेन वर लुकिंग वेरी गुड, चिकट अगर खड़ गया अपने को मालूम डैमेज की था, बट जॉश इंग्लिश और जो मैक्सवेल है दैट एड्स मोर फायर belly in their fire, because अगर लेट्स से देयर इवन ऑन अ स्लोअर रन रेट टुवर्ड्स द एंड, इंडिया को टेंडेंसी है रन लीक करने का, वहाँ पे अगर एक 100 रन मार सकता मैक्सवेल, तो पागल है उन्हें जिस तरीके से मारता भाई, तो आई थिंक इंडिया जस्ट नीड्स टू बी अ बिट वेरी के भाई दे नीड टू मेक श्योर के भाई फील्ड प्लेसमेंट इन पोजीशन है, बिकॉज अगेंस्ट पाकिस्तान दे वाज इजीली फाइंडिंग द गैप्स, मैन मैं मजाक भी नहीं कर, इतना इजी तरीके से गैप्स फाइंड कर रहे थे, इट लुक लाइक अरे यार ये लोग कर रहे क्या, बट अगर मैं आउटफील्ड में देख रहा हूँ तो 4 लोग खड़े हैं बाउंड्रीज पे, but still they're managing to hit. So I think that middle order is going to be very, very crucial to see against India. And India again need to prep their batting well. Mid-start Hazelwood, Pat Cummins, it's a very great combo that they have. So again, abhi देखना पड़ेगा. Abbott hasn't been the best, so and I think Hazelwood will come in during the matches. थोड़ी बहुत Hazelwood has a tendency to get movement and different pitches of India. We've seen that, so it will add a difference. But overall, yes, Australia, मैं वही बोल रहा था मेरे साइड में जो बैठे थे कि भाई it looks like a very strong opposition now. Australia have come to the party, बोल सकते हैं after this game. Australia looking very strong. Faz has seen them from very close, and he's saying they are a strong team. India have to be aware, and then people not taking Babar innings seriously, as in both matches he only scored against part-time bowlers. बोले इब्राहिम भाई. या वही था भाई के माहौल के भाई लैबुशेन स्मिथ को क्या मार रहा है, फुल टॉस फेंक रहे ना क्या है, which I agree to an extent चलो ठीक, but psychological advantage रहता भाई जब आपके रन बैट्स पे रन रहते हैं, and a player like Babar today I saw him much more closer and I can see he's a God gifted batsman. I'm not going to take my word for that because थोड़े shots were out of something I've not seen from an ordinary batsman like Babar के जो on drive 6 down the ground, foot movement, he's been practicing back foot Mustafa in the net, we've seen that also, spinners के against sweep shot खेला आप देखो, so he's been doing his homework and it's been replicated, what he's doing in the net he's trying to implement that in the match, उससे बहुत फर्क पड़ने वाला है, अगर बाबर टिक गया ये थोड़ा पाकिस्तान को बहुत अपलिफ्टमेंट हो जाएगी, एंड अगेन वही है कि भाई द ओनली वेयर आई एम सीइंग के भाई इशू है इज दैट नसीम शाह वॉइड. Yeah, the third seamer is a problem for them. Saurabh Patel बोल रहे hello Saurabh भाई, how are you? Let me know आपका क्या prediction है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच में, आप क्या देखना चाह रहे? Make sure you like and subscribe also, and what kind of lineup are you looking at for the India game? Faz, I think I'll let you go because you've done a very good job, great job. लंबा दिन था, 10 घंटे फैज भाई वहाँ पे स्टेडियम में. बोल तो कर दो, मैं ये जॉब बेस्ट जॉब है राइट नाउ. नहीं, रेस्ट इज आल्सो इंपॉर्टेंट. वी वांट यू फ्रेश. आई मीन दिस इज जस्ट द स्टार्ट. अभी तो टूर्नामेंट शुरू भी नहीं हुआ, बट वी आर ऑल एक्साइटेड. आई मीन फैज फ्रॉम ग्राउंड जीरो इज टेलिंग अस इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. तो आई एम श्योर लाइक एज द टूर्नामेंट प्रोग्रेसेस वी विल सी सम थिंग्स. एंड अगेन टुडे फैज जस्ट लास्ट क्वेश्चन आई टेल यू कि is looking like good batting wicket, magar aage jaake we might see the pitches slow, but right now initially we'll probably see some high scoring affairs in India in the World Cup. Yeah, I think right now Ahmedabad you can expect a high scoring affair. 3 pacers रहेंगे, हैदराबाद में भी I think वही रहेगा कहीं. हाँ, ऑफ स्पिनर थोड़ा बहुत you could say ball skid हुआ. नवाज के लिए in particular I was a little impressed to see कि अरे भाई ने विकेट निकाला. उसामा मीर also did a fantastic job on a wicket that was not giving any purchase. तो कहीं ना कहीं निकल रहा कुछ तो भी स्पिनर्स के लिए, बट एज द डेज प्रोग्रेस में भी थोड़ा बहुत रन डाउन होकर में भी स्लो हो सकता है पिच, बट वही टाइम विल टेल. यूजुअली हैदराबाद वी नो थोड़ा बहुत 2 पिचेज है हैदराबाद में, तो एक तो ऐसा रहता है, एक थोड़ा बहुत इट टेंड्स टू स्लो डाउन एज वेल. सो आई थिंक वी विल कम टू नो दैट, बट अभी के लिए यू राइट, चेन्नई लखनऊ अगेन द 2 पिचेज दैट यू माइट एक्सपेक्ट अ लो स्कोरिंग अफेयर बिकॉज इट्स अ स्लोअर पिच, बट बाकी के तो यू कैन एक्सपेक्ट हाई
और आपको कुछ ड्यू व्यू दिखा वहां पे? आप बहुत करीब थे ग्राउंड के, तो ड्यू दिखा रात ड्यू में? तो नहीं दिखा मुझे ऑनेस्टली, इतना कुछ ड्यू फैक्टर नहीं दिखा, बॉल ग्रिप कर पा रहे थे, इट वाजंट लाइक किसी के हाथ में से कुछ फिसला, तौलिए का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं। हाँ, पसीना बहुत आ रहा था प्लेयर्स को, ये बोल सकता हूँ मैं, ह्यूमिडिटी थी इन एंड अराउंड द ग्राउंड, बट ऐसा नहीं था कि भाई बॉल आप ग्रिप नहीं कर पा रहे एंड तौलिए से आप मल रहे हो और समथिंग लाइक दैट, सो इट वाज मोर और लेस फाइन आई थिंक फ्रॉम दैट एस्पेक्ट. Okay, sounds good, man. Faz, thank you so much. We will catch you very soon, and I will, yeah, get some good rest and well done today. Great job. Thank you so much, man. And yeah, again, shout out to Mustafa, man. Thank you so much. Man, कुछ नहीं कर रहा. Stay tuned to Chase the Target Faz, and all of us will try to get you the latest from from the ground, from wherever we are during this World Cup. India have home advantage. It seems Australia face some difficulty against India, so India can win easily. That is what you're saying. Yes, I think Chennai mein, I think there will be some turn available. I don't know initially कितना रहेगा, because this is the start of the season, October cricket India में, और मेरे को ऐसा लग रहा कि it's good batting wickets. Even in Chennai, we might see a high scoring affair, फिर आगे जाके it will turn. तो India will have to read the pitch well and then see. अगर आप खाली because it's Australia आप 3 स्पिनर खिला दे रहे, it might be risky. You have to see exactly pitch कैसा है. Is there any cracks? Is there will it slow down? They'll have to read the pitch well. Whoever is reading the pitch, whoever is in charge of that, will have a big responsibility on their hands. Because मेरे को ऐसा लग रहा right now कि pitches थोड़ा सा it will be good to bat on initially, पर आगे जाके slow होगा, it will be conducive to the spinners, to the turn, to the slower bowlers as well. वैसा लग रहा मेरे को. But yes, और आपके भी जो भी सवाल हैं कमेंट से आप लोग भेजते रहिए. फैज भाई हमारे साथ अभी जुड़े थे, तो आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं. There were some fans who interacted with them. वहां पे काफी फैंस थे, डेविड वार्नर के भी फैंस थे, बाबर के भी फैंस थे, काफी फैंस थे. वार्म अप गेम के लिए अच्छा खासा मतलब 25-30% क्राउड था उधर. It was a very good experience. Maybe Jackie, I went for a shorter time. Faiz bhai has been there the whole day. I went for a shorter time. I saw Australia ki thodi batting, and then I saw Pakistan ki batting. It was a good game. I think it was a very good, interesting game. Lekin wahi hai, Pakistan will have to. There's a lot of improvements they have to make, especially third seamer. जैसा फैज भाई बोले, फिर मेरे हिसाब से batting भी especially top order. आज जब part timers आए, they did really well. लेकिन when you're playing against in a World Cup game, the bowling will be more competitive. Mustafa bhai, loving your work, watching live from you. Arey Asad Mohammed bhai, I don't know if we know each other personally, but thank you so much. I actually been staying in Dubai for the last year as well. I mean, in and out. I only stay there for periods, short periods, but thank you so much. I really appreciate your comments. And make sure you like and subscribe and share it with your friends and family. Really appreciate it. ऐसे पॉजिटिव कमेंट्स हमारे को ऑलवेज हेल्प करते रहते हैं. और वर्ल्ड कप में हम लोग जितना भी कवरेज लेके आ सकते हैं, ग्राउंड से, घर से, इधर से उधर से भी विल. फैज विल बी reporting from the grounds. We have our other reporter, Mr. Pranab Pingal, chasing the target. He's also उन्हें चेन्नई जा रहे हैं for the first game India Australia, तो वहां से आपको लाइव विजुअल्स लेके आएंगे, थोड़ा चेन्नई भी घुमाएंगे हमारे को. एंड इज द फर्स्ट गेम फॉर इंडिया, सो थिंक आप लोग ऐसा सोच रहे हम खाली हैदराबाद से कवरेज कर रहे हैं. नो, वी विल आल्सो गो टू अदर सिटीज hopefully, and you will see our guys there, correspondents from Chasing the Target in different cities. We will be covering the India's first game. अब ये ओपनिंग सेरेमनी का क्या हो मेरे को नहीं मालूम. पीपल आर सेइंग कि कैंसिल हो गया, ये वो, आई डोंट नो. आज थोड़ा सा बिजी दिन था. वी वर शटलिंग बिटवीन द स्टेडियम, सो आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट द सीन देयर इज. Chennai have a few pitches that are prepared with more true bounce, so I think India should get to Chennai, assess the condition, and decide what combination to go with. Yes, because look, if you see the traditional Chennai wicket, you would say India should go with 3 spinners, especially against the opposition like Australia. Lekin because the first game of the World Cup, I think the pitch should be fresh. There should be something in it for the faster bowlers, and I think the batters will probably enjoy the pitch. That's what I'm looking at, because this is different to April, May, where it's hot. You'll have dry patches, you'll have some cracks in the pitch. It's different. The weather here is not as hot. I'm sure Hyderabad is similar to Chennai. It's not as hot as it is in April, May, March. So that's one thing that India will have to look at. They'll have to read the pitch well and then decide on their combination. Just for the sake of it's Chennai and you play Ashwin, that's not going to be the case. Of course, if there is turn on offer and they feel that thoda sa slow rahega pitch, then of course you play Ashwin. Waisa to wo nahi hai. All depends on who reads the pitch and how they beat the pitch, in my opinion. I'm really excited, man. Abhi to kya ek din baki hai. Tomorrow is one day, and then on Thursday we start October 5th, England versus New Zealand. Remember the last time these guys played in the World Cup, it was the best game of my life that I watched. It went to the super over. There's a lot of controversy, a lot of entertainment, a lot of nerves, a lot of everything. It was a crazy game. Ahmedabad will be the first game. I'm sure there'll be a lot of people coming for that game. Looking forward to that. Saurabh, please tell us about your opinion, India versus Australia match.
I actually think that India go into this game as favorites. It's the first game of the World Cup. There'll be a lot of support, a lot of momentum. And if you see the series, bilateral series which just happened, India played really well, but you cannot take Australia lightly. I would say 55-45 in India's favor, or maybe 60-40 in India's favor. But Australia have a lot of good batting depth. They have the key will be how Stark, Hazelwood, and Cummins bowl in these conditions for me. If they pick up wickets, if Mitchell Stark can make breakthroughs with the new ball and then the older ball, they bowl well in the Des, then they can be the difference. But we've seen in the past, like, Australian bowlers in Indian conditions, sometimes they do struggle, especially in the white ball. I've seen that with Cummins in the IPL too. That's why मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ that India are probably slight favorites. But you can't take Australia lightly. Australia is a really good team. They bat really deep. Faz also said today, like, everyone contributed from their batting. Even some I saw, when I was there at the stadium, some of the shots that Cameron Green was playing was remarkable, man. So they have solid batting. The bowling is one thing I noticed today as well when I was at the ground. The fielding is pretty good. They're very sharp as well. They're very alert. They'll be one of the top sides in the field. I think एक लल्लू catch drop करा था, चाचू का ही drop करा था कोई, but apart from that, their fielding was pretty good, and especially ground work and dive मार रहे थे. So it's a very good side, but I'm tipping India. I just feel that they have the momentum going to that game. If India lose that game, then there'll be a lot of pressure on their next games, which is against Afghanistan, Pakistan. But yeah, I think it should be a really good game, man. Chennai crowd will be, really excited. Stark had got fucker early today if there was DRS. Yeah, I mean, they did appeal, I think, as well, but it wasn't giving out. I didn't. I was at the ground at that time, so I didn't see the replay, so I didn't know if it was out or not. वो नहीं है. But initially, I also think that new ball, both teams bowled well, but the difference was Australia were getting because Pakistan didn't really capitalize, but Pakistan fought back well. I think Usama Mir, when he came in and bowled, he picked up wickets there. So it was an even game. Lekin Australia, thoda sa, when they give the part-timers the bowling, they let the game slip over there. If you just look at it from a match perspective, but I understand sometimes they might need in desperation 2-3 overs from Labuschagne, 2-3 overs from Steve Smith. Zururi रहेगा वो भी, right? तो ये matches में आप लगाओ, because ये match से कोई point नहीं है, हारे जीतो doesn't really matter. It's just a warm-up game. I think you have to give everyone opportunities and keep everyone on their toes, and you never know when it's required. So I think Smith, Labuschagne, these guys, Maxwell rolling their arm overs, it's more because if even one over is needed, it might help them this kind of warm-up game, this getting into some sort of rhythm. Yes, tomorrow we will get you the preview of the World Cup. We'll discuss we'll discuss all the teams. We'll discuss players. We'll discuss as much as we can. So आप लोग जुड़ते रहिए. Hopefully we'll try to come 10 p.m. India time, but we will on our social medias, we will tell you exactly when we're coming, hopefully, and we will come live and talk to you about the World Cup. We'll preview the World Cup. We'll talk about other World Cups. We'll see who we think are the players to watch out for, who we think will win this World Cup, who are the favorites. It's going to be very exciting. I love cricket. I'm sure you guys do. So make sure you like, subscribe, which will be our key batter in the middle order. So the thing is, it depends who's going to play, Iyer or Kishan. I don't know who's going to play, but I'll tell you Hardik Pandya. I'll just go with him. I think he'll be a key player in this World Cup for India with the ball and the bat, because there will be times where aap pressure mein rahenge, maybe you're 50 for 4, 50 for 3, you're chasing to 270, 300, and Hardik Pandya is a player who can put on the accelerator, he can play counter-attacking, he can consume pressure as well. I think him in the middle order, the way he evolves as a batter and bowler in this tournament will be very crucial. Look, he's now 29, 30 years old. He's at the peak of his game. Hardik Pandya is more mature now than he was, and if India need to win this World Cup, he needs to perform with both bat and ball. It's very simple as that for me. So I'm going to look at, if you ask me, key batter Hardik Pandya, key all-rounder Hardik Pandya, even key bowler at times Hardik Pandya, because he has the talent, but we need him to take it to the next step. India is playing all games at different venues and is going to play some big games. And as look, yes, they're going to play in every venue except for Hyderabad, because there's 10 venues in this World Cup and there's 9 matches that India will play. So they will play in 9 different venues. I think that's great for the fans. It gives them as much, a chance to go and watch. Someone in Bangalore can go, someone in Calcutta, Dharamshala, आपके Pune, and हर सिटी में जाके आप देख सकते हैं मैचेस. आई एम श्योर देयर विल बी फैन पार्क्स आल्सो. तो अगर आप ग्राउंड को नहीं जा सकते, टीवी में भी देख सकते हैं. देखो, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि ग्राउंड आप अगर चांस मिल रहा है आप चले जाओ. फॉर द एटमॉस्फेयर इट इज अमेजिंग, इमेंस, इट विल बी ग्रेट, स्पेशली व्हेन इंडिया इज प्लेइंग.
But if you don't get the chance, you still watch it on TV, watch it at home, watch it with your friends. आप लोग कट्ठे बैठो, देखो match. It'll be a lot of fun as well, man. HD TV या जो भी TV है, के laptop पे भी देखो तो enjoy कर सकते हो. Wherever you are, I just recommend you to watch the game. It doesn't matter if you're in the stadium, not in the stadium. I guarantee you, this World Cup will be wild. Australia giving the part-time bowlers was a tactic so they can test their death bowling. Yeah, I guess it was a tactic, and also it's a tactic to give the part-time bowlers some overs under their belt so that they're warmed up for the, like, if there's a time in a game, in a crucial game, and the Labuschagne needs to bowl one over, then this will give them that thing. Does it cause fatigue to the team at the later stage? Look, I don't think so, because these players have traveled so much. आप देखो IPL में तो हर एक दिन travel करते, they travel from here to this city, and they do that for 2 months. This is a 8-week tournament, a 6-week tournament. They know exactly what their schedule is. बीच में थोड़ा सा 2-3 दिन के break भी रहते, and some flights are short as well. It's not all flights are long. Maximum flight will probably be like 3 hours, I think, not more than that in my opinion. वो भी मैं लंबा बोल रहा हूँ शायद, but from south to north is probably 2.5 hours, 3 hours, like that. No matter what, I think it's a World Cup. They will be pumped for it. I don't think it should be an issue in terms of fatigue. That's what I'm looking at, because it's within India. So I don't think it should be a problem. Hi, sir. This is Sajid from Kashmir. Thank you so much for joining. Make sure you hit the like and subscribe button. I have a question. What are your views regarding Indian batting against spin? I think India on turning pitches do struggle against spin. Lekin there's one player who is very confident. I have a lot of belief in him when in playing spin, and that is Shreyas Iyer. I think he's outstanding against spin. But in general, we've seen a lot of the Indian batters, struggle against leg spin. Even when the ball is turning, it is difficult. I feel this Indian generation, they play fast bowling much better maybe than previous generations. Lekin spin ke against wo jo apna zamana tha, like wo wala Azharuddin, Tendulkar, Ganguly, Sehwag, they played spin much better. This lot, they do struggle at times, but who doesn't struggle on rank turners? Lekin against faster bowlers, I feel they're more confident. But again, it's white ball cricket. How much is it going to turn? If it does, maybe one or two odd games, you'll see a low-scoring turning game. Otherwise, they should be able to handle if it does turn a bit here and there. How will you see our fast bowling players? I think initially they will go with Bumrah, Siraj, and Shardul Thakur. If it's Kuldeep Yadav and Jadeja spinners, which it should be, I think they'll go with Shardul Thakur as the third seamer, because the press conferences that I've attended during the Asia Cup, it was very clear that Rohit Sharma and the team management want their bowlers to bat as well. So I think they'll go with Shardul as the third. If you ask me, Shami is a great bowler as well, especially Ahmedabad against Pakistan, where I think he can have a great run. But I think they will go with Shardul Thakur, Siraj, and Aapke Bumrah. Good night, sir. Love, Pune. I'm looking for an opportunity and platform. Please provide me opportunity and platform. I have in public administration. Also, I've done sport programs. Yeah, definitely we'll get in touch, and apne Faiz bhai jo hai will also get in touch with you and everything, and we can definitely chat. But make sure you subscribe and keep coming in, ask your questions, comments. We really enjoy everyone's support. यहाँ पे really appreciate it. And जैसा मैं बोला, कल preview करेंगे, फिर Friday अपना representative यहाँ chasing the target से जाएगा Chennai, Mr. Pranav Pingle. He's also part of the chasing the target team. He will go to Chennai. He'll get you lives from there. He'll get you vlogs from there. He'll give you fan reactions from there. Hopefully he'll attend the practice and press conference too in Chennai. तो जो पहला game है India का, we will get coverage from there too. और यहाँ से भी हम लोग हैदराबाद से और पूरा इंडिया से हम लोग आपको जो भी latest है बात करेंगे. And let's just talk cricket. Whatever you want to talk about cricket. If you want to crack jokes about cricket, anything, you're more than welcome. No problem at all. So we'll hopefully join you tomorrow for the preview of the World Cup 2023. Thank you so much for joining today. If you haven't watched the start, please watch the start. Faiz वहाँ पे मौजूद था ground पे, and he interacted with fans. So do watch that as well. And catch us tomorrow. Thank you so much for joining. Really appreciate it. This is me, Mustafa, signing off, chasing the target, and have a good rest of the evening. And the World Cup starting. Two more sleeps, and then we got the World Cup starting in Ahmedabad, England versus New Zealand. I'm pumped up, and I'm sure you are too. Catch you tomorrow, guys. Take care.